Assalamu alaikum, my dear student. I hope you are fine today. And you know we have delivered the lecture on the daily basis for the grade 9 and the 10 today. Now the lecture we will start after some time. The lecture on the mathematics for the grade 9. We discussed in the last lecture equal matrix. Now we use to the equal matrix and find the some element or corresponding element which satisfied the equal matrix. Okay, the exercise 1.1, we have to start exercise 1.1 and the question number 3. This is the last and the final question for this exercise. We have find the value of A, B, C and D. हमने यहाँ पे जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड की है विच सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन which is satisfied the matrix equation. Okay, now we have to values. हमारे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है a plus c, which is the important question for the examination point of view. Do not miss it. A plus 2b 4d minus 6 and second matrix 0 3 negative 7 और 2d. ये जो अपना क्वेश्चन है इसके अंदर हमने जो ना आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ए बी सी इसके अंदर डी तक वैल्यू मौजूद है. हमने इन्हीं की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द इक्वल मैट्रिक्स. और इक्वल मैट्रिक्स होती है आप जानते हो कि उसके जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं और आर्डर भी उसका सेम होता है. हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और आप इसको सीखने की कोशिश करना. और ये जो लेक्चर होगा बहुत अहम लेक्चर है. ये क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत अहम है. अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप फिर किसी काम के नहीं होंगे. ठीक है, अगर आपने इस लेक्चर को मिस किया तो आप फिर बाद में पछताएंगे. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिहाज से. और आपको पता है नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है तो आप इसको सीखने की कोशिश करना. और किसको इक्वल मैट्रिक्स को फॉर द अकॉर्डिंग टू द हेल्प ऑफ द इक्वल मैट्रिक्स. हमने क्या करना है विद द हेल्प ऑफ द इक्वल मैट्रिक्स. हमने इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन को यूज करना है और इसको इसके अंदर हमने ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके, नाउ we have to start this lecture according to the help of the equal matrices. Okay, you know that these are the matrices equal. So ये corresponding element है. इन corresponding element को आप लिखेंगे according to the इक्वल मैट्रिसेस. हमने इक्वल मैट्रिक्स के हल के मुताबिक करना है. तो यहाँ पे आप राइट देख सकते हैं कि a प्लस सी 0 के इक्वल है. इसी तरह आपके पास ये वाली जो बात है ये इसके अकॉर्डिंग है तो आप इसको लिख सकते हैं 2b = -7. और इसी तरह ये आपके पास जो बात आई हुई है इसको आप इसके मुताबिक लिख सकते हैं c -1 3 आ गया. इसी तरह ये 4d -6 = 2d. ठीक है जी. हमने पहली को पहले के बराबर लिख दिया है, दूसरी को दूसरी के बराबर, तीसरी को तीसरी के बराबर और चौथी को चौथी के बराबर लिख दिया है. यू नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वल मैट्रिक्स वी कैन से दैट वी कैन राइट एज फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू द फर्स्ट, सेकंड इज इक्वल टू द सेकंड, थर्ड इज इक्वल टू द थर्ड एंड फोर्थ इज इक्वल टू the fourth by the definition of the equal matrix. You are understand? Okay, so we can find the value of a b c. This value contain a plus c, which is not find this because the two variable and one equation. You know that? Okay, this is say the values of the variable a plus b, which are two variable, but the equation is one. So you cannot find the value of a and b. So this equation and this equation
this equation, the variable contain the single, which is the name of the C, and have the single equation, so we can find easily the value of C. So let us go. 1 को अगर राइट साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास ये प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज आपके पास C निकल आई है। इसी तरह D की वैल्यूज निकालेंगे तो D की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, 2D आ जाएगा 6 और D आ जाएगा आपके पास 3। तो ये वैल्यूज आप इधर लिखेंगे, C की वैल्यूज आपको पता है कितनी है, 4 है, तो इधर आ जाएगी, तो A आपके पास -4। इसी तरह A की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो आपके पास B आ जाएगा, तो 2B आ जाएगा -4 प्लस 3, ये होता जाएगा प्लस हो जाएगा 2B -3 और B आ जाएगा -3 और 2। ओके my dear student, I hope you your lecture is finished and you learn it and understand it. If you have any feeling in this lecture, you can share with me in my inbox. In my inbox with the channel Mathematics Lecture Power. It's okay. You have any problem, please share with me. तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो इसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह।